So, friends, we had started with the various sources of finance. We started discussing about its features, advantages, and disadvantages from the company's perspective. So, equity capital was extensively discussed from the company's point of view. Then, its features, disadvantages, and advantages were discussed. Then, we moved to the cost of equity. For that, we have got the various methods, and we had taken 4 methods to calculate the cost of equity. We are aware about it. I guess that's what we have done in the second module till now. So today's session will be on the loans and borrowings finance. Again, a very practical and realistic approach will be taken, will be followed to discuss its pros and cons. Let's go to the slide of it first of all. Good. So, in very simple language, basically the loan means the money taken from other people. We people are aware about it. Now, loan may be taken either in a lump sum manner from the financial institutions or from the banks, or it can be taken in the form of a security from the public at large in the form of, say, debentures and bonds. Obviously, there has to be a lot of legal procedure to be done to issue the debentures, bonds. The permissions are required to be taken from the registrar of the company. The intimation has to be sent to them. Then the requisite permissions needs to be taken from the Securities and Exchange Board of India. If you want to list those securities there, and accordingly the arrangements with the various exchanges are to be done too. The permission may be taken from the annual general meeting based on the articles of association and its rules. So various things has to be done. Legal framework needs to be followed. Not going into that as of now because that's not what the forte of our understanding is right now. So may be taken for, say, the short term, for the long term too. Working capital loans are also quite famous. We people are aware about it. For managing the short term finance requirements, we are aware about cash credits taken by the companies, bank overdraft facility, where you can withdraw the balance more than what is there in your account. You may take some short-term loans as well. So this all forms a part of borrowed capital, right? So we are right now thinking about its pros and cons. Before that, let's go to the features of it first of all. Now there may be a security, may not be a security, obviously. That depends on the type of a loan. The loan may be secured, may be unsecured in nature. Obviously, with unsecured loans, there comes the greater interest rates too. Security, as we had discussed in the last to last session, are of 3 types. For immobile properties, which cannot be moved from one place to another, like land and building or the land and building combination. For that, we generally use the word mortgage. So basically, the loans are taken by giving these assets as collateral, or those assets may be purchased on the basis of loan only, right? So assets may be given as a collateral for taking the loan. That's a one part. Another part, you may take the loan on those assets itself. So mortgage is predominantly used for the immobile property. Then we have got hypothecation and pledge. In the pledge, the possession of the property remains with the person who gives the loan, that means the lenders. And in hypothecation, the possession of the property for which the loan is taken, that possession remains with the person who takes the loan. With unsecured loans, there comes the higher interest rates too. लोग तो यहाँ पे भैया 2-2% महीने के हिसाब से भी लोन लेते हैं, 24% का इंटरेस्ट पे करते हैं. बोलो मर जाएगा क्या भाई? 24% का इंटरेस्ट पे करेगा और करते क्या है, फिर आईपीएल में सट्टा लगाते हैं. जाने तो बात नहीं करनी है उनकी. There may be interest and principal payment. While preparing the loan amortization schedule, we have come to know that installments are paid on the loan,
Obviously, there may be certain loans where the repayment may take place in a lump sum manner. That depends on the type of arrangement you have entered into with that financial institution or bank. But majorly, the installment payments will be there. So installment payments may be bifurcated, say, in interest and loan repayment, right? Generally, we use the word EMI, but that EMI cannot be straight away used for all sorts of installment. EMI stands for the equated monthly installment, friend. So if it is monthly in nature, then only the EMI may be used. Otherwise, you may just plainly refer it as installment. There may be on how financial viable the company is, how financially stable the company is. क्योंकि हर रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं होती, कुछ कुछ रिलायंस कम्युनिकेशन भी होती है। हर अंबानी मुकेश अंबानी नहीं होते, कोई कोई अंबानी अनिल अंबानी भी होते हैं। तो भैया आफ्टर एन एक्सटेंट there may be some restrictions imposed by the banks and financial institutions on your borrowing capacity, on various other conduct too. That is plainly ad hoc in nature, will get changed on case to case basis, depending upon the financial ratios which company presents, depending upon the collateral and the security which company provides, depending upon the guarantees which company may give, it will differ. Obviously, historical track record will also be taken into consideration for imposing such restrictions. When Reliance Communication was taking its last breath, at that time, so many restrictions were put on them. भैया वो अपने बोरोवर्स को पूछे बिना, मतलब बोरोवर्स मतलब लेंडर्स को पूछे बिना, सॉरी, वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी होल्ड नहीं कर पा रहे थे। एक तो मेरी मीटिंग, मेरा प्रोजेक्टर, मेरा मीटिंग रूम, हमारे ही डायरेक्टर, लेकिन हमारा जो लेंडर है उनकी परमिशन लिए बिना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं होल्ड कर पा रहे हैं। So restrictions may be there on the board of directors. The restrictions may be there on reducing the existing portion of the debt, my friends. Whatever the debt which has been already taken by a company, so this company may give the further debt on the assurance from the company that you will have to first settle down all the existing debts as quickly as possible. Then only will reduce your interest rates. Otherwise, the interest rates would be too high now because our risk position is too much. There may be restriction on the periodic information to be submitted to the financial institutions. भैया तुम एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करते हो कंपनी में, तो पहले किनको इंटीमेट करो? अपने लेंडर्स को इंटीमेट करो। अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर कुछ बड़े फैसले लेते हैं तो पहले किसको इंटीमेट करो? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंटीमेट करो। इफ यू आर एक्सपांडिंग योर बिजनेस, developing your supply chain, taking some major decisions, doing some acquisitions, or you are demerging your company, selling some percentage of the stack to others. So for taking such kind of the strategic decisions, you will have to first intimate your financial institutions from whom you have taken the loan. So such kind of restrictions may be imposed by them. Restrictions on giving loans and advances to others. It's like you take the loan from someone first and then you allow the loan to someone else. हम देखते हैं ना, वो बहुत लोग ऐसे ब्रेक करते हैं, अरे भैया ये भाई साहब तो निकलते हैं ना तो फिर कुत्तों को तो ये बड़े बड़े बिस्किट्स खिलाते हैं, फिलैंथ्रोपी तो यूं करते हैं, गौशाला में जाते हैं तो ये दान कर देते हैं, वो कर देते हैं। सुनते हैं हम लोगों के बारे में, लेकिन वो भाई साहब पैसे कहाँ से निकाल रहे हैं? दूसरों के पास लोन लेके तुम दान करोगे, ये तो ऐसी बात हो गई। तो देयर में बी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द कैपेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू गिव द लोन्स टू अदर्स until and unless you don't make the payment to the lenders from whom you have taken the loan, you can't issue the loan to others. Now those kind of restrictive terms
Maybe there. I'm using the words very carefully. Maybe. That depends upon situation to situation, company to company, case to case. Obviously, the financial situation will also be taken into account. Restriction on credit period of debtors. When it comes to a debtors, you give the goods and services on a credit basis. Various decisions you take, my friends. The first decision may be, say, whether to allow the debtors a credit sales or not. First of all, whether to make the credit sales or not. Then what percentage of the sales may be allowed as a credit sales, or the entire sales may be allowed as the credit sales. A second decision to be taken. Then how many number of days of credit may be allowed? 10 days, 15 days, 20 days, based on the industry practice, competitive environment, you will take this decision. So there may be a restriction imposed by your lender that you cannot allow your debtors more than so and so period, because higher the credit period you allow to your debtors, higher will be a chances of bad debts, and higher will be a chances of bad debts, higher will be the risk of the company who has given you the loan. So accordingly, there may be restrictions on allowing the credit period to your debtors as well. So this may be the restrictions imposed on company. So these are the various features of term loan. May I have a confirmation that it's crystal clear? No rocket science has been discussed yet. We were already aware about it, but it was forming a part. That's why we have discussed it. Now we'll go to the advantages and disadvantages. Before that, I seek the confirmation from students, please. Is it clear till now, friends? Thank you so much, Mr. Meg. Thank you, Mr. Sid. Mr. Rashid, very nice. Let's move ahead. Let's go to the advantages first of all. Everyone, please try to put the utmost focus. First advantage is the interest on debt is a tax deductible expense. We had discussed this point while covering the equity capital too. Interest is basically the payment made to outsiders on the loans you have taken. That is chargeable as an expense as per the Income Tax Act. There is a lot of savings which you can make by taking the advantage of this expense. We had seen this example earlier too. I am repeating that because that's very important point. Based on that, the further calculations of the cost of debt will also be dependent. So say this is the P&L account where you have opted for the equity. So you have got the two alternatives. Either you may opt the equity or you may go with the debt in the form of say loans or debentures. Now let's take the first example. Here you have got the sales amount of 100 rupee and the expense amount of 50 rupee. Now the profit before tax will be 50. Say the interest is not there obviously. Say the taxation is 30% on the profit before tax. So you will have to pay 15 rupees of tax here because on 50 rupees you pay 30%. So your profit after tax will be 35. Now you make the payment to equity shareholders, say in terms of dividend, which is 10 rupee. So the money you can transfer in reserves and surplus will be how much? 25 rupees. Let's take the example where we had taken a debt and where there is no equity capital. So incremental dividend will not be there. Again, the expense will be 50. Sales will be 100. Profit before tax is going to be no. Before profit before tax, we will have interest payment as well now, right? Because interest is considered to be an expense. So say the interest amount of 10 rupee is paid. So the profit before tax reaches to 40. Now on that you pay the tax percentage, which is 30%. So 30% of 40 will be 12 rupee. So your profit after tax is going to be 28.
Now this 28 may be directly transferred to reserves and surplus because in this case we have opted for loans rather than the equity. So friends, in the earlier case we are able to transfer 25 rupees to reserves and surplus, and in this case we are able to transfer 28 rupees to reserves and surplus. That means we are able to do a savings of 3 rupees if we opt for a debt. Try to understand. The cash outflow in the expense in both the case is same for you. 10 rupees of dividend is paid over here and 10 rupees of interest is paid over here. In both the cases it's gonna be 10 rupee only, but still you are able to transfer more in the reserves and surplus if you take the loans and borrowings. It's because you get the deduction of interest expense as per the Income Tax Act. That is the biggest advantage of debt finance. Unlike the dividend, dividend is paid after profit after tax. Here you may check it. It is the appropriation of a profit. It can never be regarded as an expense, right? But yes, few provisions were inserted earlier where the dividend distribution tax was paid by the companies and that was allowed as an expense to the companies. Let me tell you one case study, very nice, realistic one. So आपने नाम तो सुना होगा, पी चिदम्बरम का नाम सुना है सभी ने? कौन थे वो? किसी को अगर याद आ रहा हो, नाम सुना होगा पी चिदम्बरम साहब का? Yes, you may communicate through the chat box. You may unmute yourself, whatever the case it may be. Former finance minister, yes, Mr. Malhar. Very nice. Now that Lungi was very famous for making the manipulations, you know. Such an intelligent guy he was. He used to play with the words like anything. So there was a budget in which he wanted to introduce the dividend distribution tax. So try to understand how he did the announcement to the entire world. He came to a parliament on the budget day where basically the proposals are made related to the changes in direct and indirect taxation through the finance bill. At the end of the February month, there may be a session where the budget may be discussed for the next year and in which the taxation amendments and proposals are also passed through the Act of Finance Bill. So when he presented the budget, he wanted to introduce the dividend distribution tax. तो पहले तो आके सबको बोले कि भैया आपको जो डिविडेंड के ऊपर टैक्स पे करना है ना, वो अब आपको नहीं करना पड़ेगा टू द इन्वेस्टर्स. सो इन्वेस्टर्स वेरी वेरी हैप्पी. दे वर लाइक, ओ माय गॉड, हमें तो अब कोई डिविडेंड इनकम के ऊपर टैक्स पे करना ही नहीं है. लेकिन चिदम्बरम भाई साहब ने उल्टे कान पकड़वाए थे. क्या करवाए थे? उल्टे कान पकड़वाए थे. वो बोले कि आपको भैया, आपको इसके ऊपर कोई टैक्स तो नहीं पे करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, लेकिन बाद में एक छोटा सा लाइन दे दिया, जैसे वो म्यूचुअल फंड के बाद आता है ना कि इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वैसा करके उन लोगों ने एक छोटा सा कंडीशन डाल दिया. नाउ द कंपनी विल बी मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड. So it will be a liability of the company to make the payment of tax for the dividend distributed by the company. It was called as the dividend distribution tax. यहां तक बात खत्म नहीं हुई. अच्छा, पहली बात तो ये समझो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है भैया, ठीक है, तो कोई तो पे कर रहा है, आप करो कि कंपनी करो. अब पहले क्या होता था कि आप हर एक को तो टैक्स पेमेंट करना नहीं था. Nowadays, up to a gross total income of 5 lakhs rupees, you are not supposed to pay any tax, including the benefits of rebates. And earlier, that limit was up to 2 lakh 50 rupees for the individuals resident in India. That up to 2 lakh 50,000 rupees, you are not supposed to pay any tax money, right? लेकिन अब तो भैया आपके ऊपर
₹5 का भी डिविडेंड इश्यू होता है तो कंपनी उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे कर देती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, दैट वाज द डीडीटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100% कलेक्शन आ गया डिविडेंड के ऊपर टैक्सेशन का। पहले तो कितने लोग इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते होंगे? 5-6%, 7% लोग। उसमें भी कोई कोई लोग की इनकम 2,50,000 से कम होगी। तो only a fraction of the people will be actually making the payment of tax on the dividend distributed. But now if the company will be making it, that means अगर आपके पास ₹5 का भी अगर डिविडेंड आता है तो उसके ऊपर टैक्स कट करके आता है। अच्छा, इन्वेस्टर्स को भी कोई फायदा नहीं था इस मूव से, पहली बात तो, क्योंकि दैट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स टू बी पेड बाय अ कंपनी वाज अलाउड एज एन एक्सपेंस इन द इनकम टैक्स एक्ट। दैट मीन्स कंपनी कैन चार्ज इट एज एन एक्सपेंस। If company can charge it as an expense, that means obviously the profits will be less. If the profits will be less, obviously the dividend payouts will be less. तो अगर कंपनी पे करेगी तो कंपनी आपको डिविडेंड ही उतना कम डिस्ट्रीब्यूट करेगी टैक्स पेमेंट करने के बाद। तो कोई कोई बोले कि अब हमें टैक्स पेमेंट नहीं करना है, बेटा तेरा कट क्या आता है टैक्स। Now that dividend distribution tax was finally removed by our finance minister Nirmala Sitharaman a few years back. Now the income of the dividend you receive is chargeable in the hands of the recipient again, that means the individual investor. Earlier that was exempted up to 10 lakhs rupee. So up to 10 lakhs rupees of the entire dividend you are getting in the entire year, you are not supposed to pay even a penny of tax on it. But now you are liable to make the payment of taxation on the dividend payment. It will be considered as the income from other sources as per the Income Tax Act 1961. अब मैंने ये राम कहानी इसलिए की क्योंकि मैं आपको डिडक्शन के बारे में समझा रहा था। तो डिविडेंड को कभी भी डिडक्शन इंटरेस्ट की तरह नहीं मिलता। हाँ, बीच में एक प्रैक्टिस शुरू हुई थी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का डिडक्शन मिलता था, उस समय पे कंपनियां डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती थी, उनको बेनिफिट था क्योंकि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डीडीटी का उनको एक तो टैक्स पे करना था प्लस उनको एक्सपेंस अलाउड किया था। तो एक्सपेंस अलाउड किया तो उसके बाद में जो इनकम टैक्स पे करना है तो वो भी कम हो जाता है ना, कोई भी चीज़ों को अगर तुम एक्सपेंस अलाउड कर दो तो। Well, that was slightly off the track. So let's go to the second one. It does not result in dilution of the control, my friends. If you take the new loans, the dilution of the control never takes place. In equity too, in spite of the fact that equity shareholders have got the preemptive right, they have got the right to receive the new shares before everyone, but still some or other sort of the dilution will always take place in the equity capital. नए वाले इक्विटी शेयर्स अपन इश्यू करते हैं दूसरों को, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कुछ ना कुछ परसेंटेज होल्डिंग डाइल्यूट होता है होता है होता है, एकता कपूर की सीरियल की तरह 3 बार। लेकिन लोन लेने में तो कोई कंट्रोल डाइल्यूट हुआ नहीं, आप उनको कंट्रोल तो दे नहीं रही हो। इक्विटी शेयर होल्डर्स तो रिजोल्यूशंस पास कर सकते हैं भैया, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करेंगे, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे, चेंजेस बोलेंगे, ये कर दो वो कर दो। लोन वाले बेचारे ज़्यादातर बिजनेस में इंटरफियर नहीं करते। लेकिन हाँ, एक बार तुम्हारी हालत नीरव चौकसी या तो फिर विजय माल्या जैसी हो गई तो उसके बाद में हर चीज़ों पे वो कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, रिस्ट्रिक्टिव टर्म्स। But that will happen only after you become the non-performing asset for them. The payments are limited to interest and principal. If your liability is fixed, then at least you are rest assured that you won't have to pay any penny more than that. But that does not happen in the equity capital. Every time you will increase your profits, equity shareholders will come up with the higher expectations. भैया हमें डिविडेंड बढ़ा दो, डिविडेंड बढ़ा दो, डिविडेंड बढ़ा दो। कैसे डिविडेंड बढ़ाए हम तुम्हारा? लेकिन इंटरेस्ट वाले कभी भी आके नहीं बोलेंगे कि तुम बहुत तो अच्छा परफॉर्म करते हो तो एक काम कर दो, इंटरेस्ट का पेमेंट ज़्यादा कर दो। नहीं, इट्स लिमिटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ
whatever the level of sales you have, irrespective of whatever the level of profits you have got. तो कई बार हमारी लायबिलिटी अगर फिक्स होती है तो अच्छा होता है. जो कोई लोग बोलते नहीं है ना कि मुझे क्या चाहिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो फिर वो लोग एक्सपेक्टेशंस को रेज करते हैं. बोलो, उससे तो अच्छा है कि हम एक्सपेक्टेशंस किसी की रेज होने ही ना दे. उनको बता दे भैया इतना ही कमिटमेंट है हमारा, सो यू आर रेस्ट अश्योर्ड, इतना ही पैसा निकालना है बिजनेस में से. कल जाके उनकी एक्सपेक्टेशंस रेज होने वाली नहीं है. मैच्योरिटी ऑफ द लोन कैन बी सिंक्ड विद द पीरियड फॉर विच द फर्म नीड्स फंड्स. भैया तुम्हें पैसे चाहिए थे 5 साल के लिए, तो लोन को तुम वैसे ही अरेंज करोगे कि 5 साल के बाद लोन का रीपेमेंट हो जाएगा. Obviously, that happens with the companies, with the every business entity, that right now they do not have the money, but after 2 or 3 years they may be able to make the installments. तो वो लोग लोन की शेड्यूल भी वैसे ही करते हैं कि 5 साल के बाद जब उनके पास अच्छे खासे पैसे हो गए तब वो लोन का पूरा रीपेमेंट कर देंगे. बट इफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स विल बी देयर इन द इक्विटी, नो, तो वो तो परमानेंटली हो गए भैया. वंस दे आर इन, दे आर परमानेंटली इन. दखल अंदाजी करते रहेंगे कंपनी के काम में, ये कर दो, वो कर दो, ये डायरेक्टर को चेंज कर दो, वो डायरेक्टर को चेंज कर दो, प्रॉफिट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, डिविडेंड क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं, ये रिजोल्यूशन पास करेंगे, वो रिजोल्यूशन पास करेंगे, फलाना ढिकना. तो इक्विटी कैपिटल रेज करने के पहले 100 बार सोचो, बिकॉज दे आर परमानेंटली इन. एंड इफ some undue and unwanted person will get some percentage of the holding, influential percentage of the holding, तो वो बंदा आपको जिंदगी भर परेशान करता रहेगा, क्योंकि कंपनी कैन नेवर फोर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स टू रिडीम देयर शेयर्स. एखादा बंदा एक खराब केरी આવી જાય તો આખા કેરીના કાર્ટૂનને બગાડી નાખે. તો એકાદ વ્યક્તિ પાસે 3-4% સ્ટેક આવી ગયો કંપનીનો, तो जिंदगी भर दखल अंदाजी करतो रहेशे ने नड़तो रहेशे कंपनी ने. प्लस 3-4% is a very influential holding, right? He may take the help of some other stakeholders, shareholders, to pass the judgments in their favor. So it's very difficult sometimes to manage the expectations of all the shareholders. जो लोग आपका विजन शेयर नहीं करते, जो लोग आपका मिशन शेयर नहीं करते, जो लोग आपके ऑब्जेक्टिव्स को शेयर नहीं करते, उनके ऑब्जेक्टिव्स मोटिव्स अलग है, वो एक बार घुस गए तो फिर परमानेंटली कंपनी को नड़ते रहेंगे. बट द मैच्योरिटी ऑफ द लोन कैन बी सिंक्ड विद द पीरियड फॉर विच यू रिक्वायर एक्चुअली द फंड्स. You require the funds for 5 years, you may take the loan only for 5 years. After that, the payment may be made, and then Tata bye bye see you will happen to loans and borrowings. Cost of issue of loan on debt is significantly lower than preference and equity capital. Obviously, because you will have to incur very less amount of formality, right? You just go to the banks and financial institution. You just have a word with them, present your financial statements, give them the documents and every type of KYCs they want, and the loan will be disbursed and sectioned within just few days. It will be credited in your account. But that process is quite lengthy if you want to issue the equity shares to the equity shareholders. Lot of legal burden has to be taken by the company. That's why the cost of issue of loan will always be significantly lower. Now यहाँ तक confirmation है, तो अब मैं आगे वाले point में जाता हूँ जो थोड़ा सा आपका intellect test करेगा. Confirmation through the chat box that till now it's crystal clear. Everyone, should I proceed further, guys? Thank you so much, Mr. Jai. Others, I'm assuming that they are clear. Mr. Tushar, very nice. Now, please put the focus. That's a very important point we are going to discuss now. Inflation was not influencing our financial decisions earlier when we did not have the knowledge of time value of money, when we were not aware about the economics of
money, how it was working, right? But now we are aware, we know that inflation affects our decisions a lot. When it comes to the investment return, my friend, your effective return will always be like this. The return you get minus the inflation rate. That is your effective return, right? The key is to give the higher effective returns. So if your return is 10 percentage and the inflation rate turns out to be say 8 percentage, effectively you have just earned 2 percentage on the investment of your money. Because all the goods and services you were buying at 100 rupees earlier will be requiring 108 rupees now to buy the same amount of goods and service. But the value of your fund has reached to 110 rupees from 100 earlier level, because you have got 10 percentage return on it. So effectively you have earned only 2 rupees, right? In the same manner, the effective cost of debt will always be the cost of debt minus the inflation rate. That is your effective KD. KD stands for the cost of debt. Now try to understand this point. Obviously the cost lower will be there, better it is for you, right? क्योंकि आप उतना कॉस्ट कम इनकर करते हो. अगर आपका लोन का कॉस्ट है समझ लो 8% और इन्फ्लेशन है 7%, देन द इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ लोन यू हैव टेकन इज जस्ट 1%. उसका रीजन मैं बताता हूं. बेटा अगर 7% का अगर इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो तुम्हारे गुड्स एंड सर्विसेज में जो सेल्स हो रहा है उसमें ऑटोमेटिकली 100 रुपए के हो जाएंगे 107 विदाउट इवन selling even a penny of your goods and service more. जो स्टॉक्स लेवल आप पहले मेंटेन करते थे, जितना सेल्स आप पहले करते थे, आप उतना ही क्वांटिटी का सेल्स करते हो, लेकिन आपके प्रॉफिट्स, आपके सेल्स 100 रुपए में से 107 रुपए तक पहुंच जाएंगे. बेसिकली आपने क्वांटिटी के टर्म्स में एक भी क्वांटिटी ज्यादा सेल नहीं की हुई है. इन्फ्लेशन इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू द पीपल हु आर डूइंग द बिजनेस, बिकॉज द प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेस. अब क्या हो गया भैया, अगर आपको 8% का लोन का इंटरेस्ट देना है, कितने परसेंटेज का? 8% का. तो समझ लो आपको 8 रुपए का इंटरेस्ट लगता था. तो 8 रुपए के इंटरेस्ट के सामने तुम्हारे 7 रुपए तो वैसे ही बढ़ गए. आपने एक भी सेल्स की क्वांटिटी को रेज नहीं किया है, लेकिन 7 रुपए आपके वैसे ही बढ़ गए हैं. तो 8 रुपए में से 7 रुपए तो यूं ही कवर हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. तो आपको इफेक्टिवली एक ही रुपया कहीं से निकालना पड़ेगा ना. मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? So your real cost of debt will always be the cost of debt nominal here, this one, minus the inflation rate. आपके सेल्स अगर 107 रुपए से बढ़ गए तक हो गए, यहां पे सेल्स लिया है, you may take the profits as well. So effectively you will have to bring only 1 rupee now new to cover up the entire interest payment of 8 rupee. Let's take another example. ઘણા વેપારી લોકો કહેતા હોય ને કે ભાઈ જ્યારે છે ને ભાવ વધે ને ત્યારે ધંધો કરવાની મજા આવે ભાઈ, આવું કહેતા હોય, આપણે સાંભળતા હોઈએ, રાઈટ? Say they have got 100 rupees of sales here, expenses of 50, so profit will be how much? 50. Say the prices of goods and services are getting increased by 10%, and it will increase on both the sides, right? On income as well as on the expense side. But obviously any company's income side will be higher than expense, because that's why they are doing the business. So say sales has reached to 110 and expenses are now 55, 10% increment in both.
The goods and services you offer to the other people are also now more expensive by 10%. And goods and services you have taken from the other people is also now more expensive by 10%. So effectively your profits have raised to 55 rupees, right? आपने एक भी क्वांटिटी का सेल्स ज्यादा नहीं किया है. जितना सेल्स पहले करते थे नंबर ऑफ गुड्स का, उतना ही सेल्स अब भी कर रहे हो, लेकिन आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 50 में से कहां पे पहुंच गई? 55 में. तो इन्फ्लेशन जब होता है उस समय पे आपका कॉस्ट ऑफ डेट इफेक्टिवली बहुत कम हो जाता है. सो कॉस्ट ऑफ डेट गिव्स यू द प्रोटेक्शन व्हेन द इन्फ्लेशन रेट विल बी अनएक्सपेक्टेडली वेरी हाई. 5 रुपए तो आपके प्रॉफिट के यूं ही बढ़ गए. मतलब समझ लो, अगर आप 7 रुपए इंटरेस्ट कॉस्ट देते थे तो इफेक्टिवली आपको सिर्फ 2 रुपए का ही अरेंजमेंट करना है, क्योंकि 5 रुपए तो वैसे ही मिल गए आपको, just because of the incremental market price you have got. May I have a confirmation that it's crystal clear now? This point is understood by everyone, that fixed percentage debt provides protection against high inflation. Confirmation please, all of you. Mr. Jay has given it, Mr. Tushar has given it, very nice. Others? Mr. Sid as well, very nice. Let me end this advantages with one story. So everyone, please listen to this story. It will be taking just a minute. अच्छा, हम लोग है ना पहले छोटे थे तो उस समय पे हमारा जो गांव है उसके बाहर क्रिकेट खेलने जाते थे, ग्राउंड था वहाँ पे. So my native place is at Talalagir, and there is one river called Hiran Nadi which passes on through the Talalagir city, right? तो हिरण नदी के बाहर में से, गांव के बाहर हिरण नदी के बाजू में कुछ कैनाल्स जाती है जो खेतों वगैरह में जाती है कैनाल. तो नदी के बाहर से कैनाल वहाँ से जाती थी. तो एक दिन हम सब वहाँ पे क्रिकेट खेलने गए, सब साथ बैठे थे. मतलब एक साइकिल पे तो ऐसे 2 तो 3 लोग पीछे बैठे हैं, आगे एक कोई बैठा है, ऐसे एक साइकिल में 3 जन बैठ के हम 4-5 साइकिल लेके वहाँ पे गए क्रिकेट खेलने के लिए. तो उसमें एक आधा जो लड़का था ना, वो थोड़ा सा फैटी था. कैसा था? फैटी. ऐसे टमक टमक कर बेचारा चलता था. अब वो चलने में भी बेचारे को इतनी तकलीफ होती थी, तो क्रिकेट के रनअप्स में भी हम बहुत करते थे कि भाई उसका कोई फील्डर आ जाए, क्योंकि वो हर बार रनआउट ही होता था, इंजमामुल हक की तरह, वो पाकिस्तान का. तो जिसकी टीम में भी वो आए, बैटिंग अच्छी करता था लेकिन उसके लिए कोई रनर चाहिए, वो दौड़ नहीं पाता था. अब हम एक दिन क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है, तो एक कुत्ता अचानक से वहां से आया और उस फैटी लड़के के पीछे वो कुत्ता दौड़ा. अब ये भाई साहब दौड़ना शुरू किया. तो अब ये तो दौड़ रहे हैं, कुत्ता उसके पीछे है, लेकिन ये कुत्ते के आगे, मतलब हम तो ऐसे शॉक हो गए कि इतना कैसे दौड़ पा रहा है भैया, ये हर बार रन आउट होता था ये तो हमारे क्रिकेट खेलते थे तब, लेकिन वो दौड़ता जा रहा है. और आगे आ गई कैनाल, ये भाई साहब फंस गए. अब करे तो क्या करें. लेकिन इसने वो 10 फीट की पूरी कैनाल को क्रॉस कर दी. अब ये कैनाल वो कभी भी क्रॉस करने वाला था नहीं पहले. कैनाल की बात तो छोड़ो, वो कभी इतना दौड़ने वाला भी नहीं था. लेकिन जैसे उसके पीछे कोई कुत्ता दौड़ा, ये भाई साहब पूरी कैनाल को क्रॉस कर दिए. बताओ. तो बेटा, जब कभी पूंछ के पीछे अगर आग लगती है ना, तो फिर परफॉर्मेंस हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है. हमारे गोल्ड मेडल आने लगेंगे. देखो किसी के पीछे कुत्ते दौड़ाओ तुम दौड़ने लगेंगे सब. फिर हाई जंप वगैरह सब यूं होगा. When I was working as the agency manager earlier, and then I got promoted to training manager in Birla Sun Life Insurance. So at that time, in one of the months, my performance was not very good. So for the entire 1 month and 2 months, I was not performing well in terms of the new appointments and new amount of sales from the other people.
सो आई वेंट टू माई मैनेजर एंड सेड दैट भैया ये परफॉर्मेंस में पता नहीं क्या मेरी टेक्निक कोई गलत है, मेरी जो डील्स है वो क्लोज क्यों नहीं हो रही है। तो बोला एफर्ट्स तो ले रहे हैं लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। तो बोले एक काम कर तू लोन ले ले। मैं बोला क्या लोन, मैं तुम्हें इधर परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, तुम बोल रहे हैं कि लोन ले लो। एंड देन ही शोड मी अ डेटा कि अभी तक जितने भी उसके प्रीवियस एम्प्लॉइज थे जो इस लेवल ऑफ पोजीशन में थे, उन लोगों में से जिन्हें जिन्होंने भी लोन ली है उनका परफॉर्मेंस 2 to 3 times इंक्रीज हुआ आफ्टर टेकिंग द लोन, मे बी अ व्हीकल लोन, मे बी अ कार लोन और सम अदर सॉर्ट ऑफ ए लोन। पहले अगर वो 25-30 हज़ार रुपये का इंसेंटिव कमाते थे तो अब वो 60-70 हज़ार रुपये का इंसेंटिव पर महीने कमाने लगे थे। तो बेटा जब कभी भी हमारे पीछे एक मीटर घूमने लगता है ना कि हमें मालूम पड़ जाए कि फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कहीं ना कहीं से ये निकालना ही पड़ेगा, तो फिर परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। वेकअप सीट देखा था कैसे अकल ठिकाने पे आ गई, थोड़ी देर बाहर रहने के लिए बोला तो। सूर्यवंशम देखा है, वो तो बहुत लोगों ने देखा होगा, जब भी चालू करते हैं सेट मैक्स में वही दिखाई देता है। भाई साहब को घर से निकाल दिया, खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, अचानक से परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया। ये तो मूवी की बात हो गई, दैट्स व्हाट हैपेंस इन द रियलिटी टू। आई नो दैट द मोटिवेशन बाय अ फियर इज द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ मोटिवेशन यू शुड एक्सपेक्ट। सम पीपल मे गेट मोटिवेटेड बाय द इंसेंटिव्स टू, राइट। आप उनको हड्डी दिखाओ तो वो दौड़े दौड़े आते हैं, लेकिन बहुत सारा एक वर्ग ये है जिनके पूंछ के पीछे आग लगती है तब दौड़ते हैं। कोई कोई लोगों को तो मोटिवेशन चाहिए नहीं, वो बोले हमें तो कुछ करना ही नहीं। अच्छा, कोई कोई लोग अनअफेक्टेड ही होते हैं, वो तो उनके लेवल ऑफ मोटिवेशन से वो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ उनको सोसाइटी को देना है, कुछ एस्टेब्लिश करना है, कुछ अपना नाम कमाना है, इसलिए वो मोटिवेटेड होते हैं। तो बहुत सारे कम लोग ऐसे होते हैं। आई नो दैट दैट इज द लोएस्ट कैटेगरी ऑफ मोटिवेशन यू शुड एक्सपेक्ट, द मोटिवेशन बाय फियर, but that's what the hard reality is, you know. So disciplining effect on the management of the firm, that has been historically seen in the data, that once the companies are taking the debt, their financial performances are also getting up. क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कई बार तुम ग्रांटेड ले सकते हो, डिविडेंड इश्यू करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको ग्रांटेड ले लेते हैं। जब तक हमारे पीछे कुछ मीटर चलता ना रहे ना तब तक परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी नहीं होती। Ideally, the debt to equity ratio is considered to be 2:1, right? Not generally applicable to every sorts of an industry and company, but ideally it is considered to be at 2:1 generally for all the companies. That means there should be 2 times of your debt in comparison to the equity capital you have gathered. तो debt लेना कोई बहुत बुरी बात नहीं है. In Rajkot, specifically in Saurashtra, we see that there is a lot of taboo for taking the loan. See, you will have to take the judgments based on your business acumen, right? If you can employ your own money at 10 to 12 percentage rate of return in your investments, in your businesses, if there is a demand of your incremental sales, or in any other sorts of an avenue, then it's good for you to take the home loan at 7 percentage, you know, because अगर आपको home purchase करना है बेटा और आप अपना खुद का पैसा उसमें लगा देते हो, तो वही खुद के पैसे से तुम 10-12-15% अर्न कर सकते थे इजीली। यू हैड दी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। लेकिन उसको अगर तुम होम के अंदर जाने दोगे पैसा, तो फिर बाकी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारी चली जाएगी। सो इट्स बेनिफिशियल नाउ डेज टू टेक द लोन एट 7% फ्रॉम द होम। बिजनेस में से तो 10-12% हम यूँ निकाल लेंगे, वो पैसा अगर हमारे पास रहा तो। So it's not always bad to take the loan. If the loans are available to you at the cheaper rates and you can occupy your own funds at some higher interest rates in some other investment alternatives and avenues, then you should definitely opt for taking the loan instead of buying the home by your own money. And the last point, easier for the management to communicate the important information to private lenders
than to public in capital markets. इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत स्पेकुलेट करते हैं भैया, एक तो थाउजेंड्स लैक्स में होते हैं, इंफॉर्मेशंस के घोटाले करते हैं, कैसे भी ट्रेड करने लगते हैं, रूमर्स फैल जाती है मार्केट के अंदर। तो आपको अगर कोई उनको इंफॉर्मेशन देनी हो, से इफ सम अनफेवरेबल थिंग हैज हैपेंड विद द कंपनी, the major contractor has parted his ways from the company, or you have lost some of the major suppliers or major customer, whatever the case it may be. अब ये इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को पास ऑन करनी है, तो इन्वेस्टर्स में मिस इंटरप्रेट इट, मिस कम्युनिकेट इट, they may not able to understand what company is talking about, they may not be able to understand the vision of the people sitting in a company, they don't know about the mission statement of the board of directors, they don't know about the objectives, long term planning and everything of the company. वो फिर निकल जाएंगे तो फिर वैसे ही आपके मार्केट प्राइस क्रैश हो सकते हैं। लेकिन भैया अगर लेंडर्स हो लोन्स एंड बोरोइंग्स में 4-5-10 लिमिटेड इन क्वांटिटी, आप उनको एक जगह पे बुलाओ, एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन दो, चाय पानी नाश्ता खिलाओ, उनको बोलो भैया हमारे साथ कुछ एडवर्सिटीज़ हो रही है तो आप हमसे विश्वास मत खोइए। So those people will be able to understand you because they are less in quantity, they are technically well qualified enough to understand what you are talking about, to understand how the company is facing the problems right now. So it's easier for the management to communicate to the lenders because they are less in quantity in comparison to if they are communicating to the equity shareholders. So these are the various advantages of the term loan we have seen today. May I have a confirmation from students that it's crystal clear till now, all of you? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है बेटा? From everyone, please. Very nice, Mr. Kaushal, Mr. Malhar, Mr. Sid. Nice. So disadvantages will be discussed in the next session along with the cost of debt. And for the cost of debt, we have got few formulas. So next session will be a combination of theory plus some practice question. So please put your enrollment number as a mark of your attendance. That's it from my side for the day. If you have any question or query, I am here for you to answer. If you want to disburse, then you can. Thank you so much. Bye-bye. Take care.